सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक भी नहीं धीरज खोते। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक भी नहीं अपना धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में अपनी राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में अपनी राह बनाते हैं। सफर का ही था मैं सफर कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनल गोयल, 2008 बैच आईएएस ऑफिसर। और आज हमारे जो टॉक शो मैंने जो रिसेंटली लॉन्च किया, शिखर का सफर, उसमें एक बहुत ही खास मेहमान, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र में, मैं ये बात एम्फसाइज करना चाहूंगी कि एट अ वेरी यंग एज शी हैज क्वालिफाइड द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन 2023 एग्जामिनेशन, जिसके रिजल्ट्स अभी हाल ही में 2024 में अप्रैल मंथ में अनाउंस हुए। एंड the way she has shown her determination, resilience, it is totally an impeccable journey. And she is part of our esteemed show, a platform which I have recently initiated, शिखर का सफर। उसका ये एपिसोड नंबर 3 है, एपिसोड नंबर 3 है, जिसमें मैं वेबिनार के माध्यम से आज इशिता गुप्ता, AIR 154 रैंक उनको मिली, इशिता गुप्ता रैंक 154 इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आई एक्सटेंड द हार्टिएस्ट वेलकम and gratitude to Ishita, to you, for joining us over here. And it is indeed our proud privilege as well as a pleasure to be hearing your story of how you thought about civil services, how you cracked about civil services. And thank you so much for sparing your valuable time with us. Welcome to you, Ishita. Thank you so much, ma'am. It's been an honor to be here and have a talk with you. So it's really a very great feeling. Thank you so much. थैंक यू सो मच। तो इशिता से एक सवाल पूछने से पहले मैं ब्रीफली इशिता के बारे में अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी। तो इशिता, जिनकी रैंक 154 आई इस एग्जामिनेशन में, शी वाज बॉर्न इन हरदोई। हरदोई यूपी में डिस्ट्रिक्ट है। 2001 में उनका जन्म हुआ। और इनकी फैमिली में दोनों, इनके माता पिता दोनों ही पेरेंट्स डॉक्टर हैं और दोनों ही हरदोई में बेस्ड हैं। और बहुत सपोर्टिव, आई एम श्योर उनका एक सपोर्ट मिला होगा, एक इकोसिस्टम ऐसा रहा होगा, क्योंकि खुद वो दोनों पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, तो इशिता को उन्होंने इनकरेज किया होगा। एंड शी हैड हर अर्ली स्कूलिंग एजुकेशन इन हरदोई। उसके बाद वो दिल्ली आई। दिल्ली में उन्होंने डीपीएस स्कूल वसंत कुंज से अपना 12th उन्होंने क्लियर किया साइंस स्ट्रीम के साथ। उसके बाद में शी मूव टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एट द कॉलेज ऑफ इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, जहाँ पे उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया। सब्जेक्ट्स उनके इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस थे। और इतना मेरिटोरियस बैकग्राउंड उनका रहा। और उनके मन में ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही, ऑफ कोर्स इशिता विल बी शेयरिंग द इनसाइट्स इनटू व्हाट प्रॉम्प्टेड हर टू बी इन सिविल सर्विसेज, बट जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, तो उनके मन में बहुत पहले से ही आ गया कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है। एंड देन शी स्टार्टेड हर प्रिपरेशन ड्यूरिंग हर graduation days. And yes, at the age of 22, friends, at the age of 22 एग्जामिनेशन लिख के उसको क्लियर किया उन्होंने, और रैंक 154 उनको मिला है। शी विल बी अलॉटेड टू द इंडियन पुलिस सर्विस। एक महिला आईपीएस अधिकारी हमारे साथ में आज जुड़ी हैं। अगेन अ वार्म वेलकम टू यू इशिता। सो लेट मी जस्ट नाउ टेक द क्वेश्चन टू यू। सो इशिता, मैंने थोड़ा बहुत बताया आपकी आपकी बैकग्राउंड के बारे में। व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड ऑन, लाइक व्हाट हैज बीन समथिंग स्पेशल फ्रॉम योर स्कूल डेज, फ्रॉम योर ग्रेजुएशन डेज, एंड specifically your journey into the UPSC, your journey into civil services? What prompted you, what motivated you to come to civil services? Ishita.
Yeah, so ma'am, as you rightly told about my parents and my family background, that my parents are professionals, working professionals. So from childhood, I have seen my parents putting very hard hours into the job, and how their job is directly related to the people, and what kind of satisfaction comes when they serve people and they see them relieved from all their grievances and all. So that kind of feeling was always there. Ki whatever field I go, I need to be directly connected to the people and derive that feeling of satisfaction that I'm able to help the cause of humanity. So the first initial thought of joining the civil services came from this insight. Secondly, when I moved to Delhi to pursue my higher education, graduation, and all, then I got more exposure about the field of civil services and how to get into it, what is the job profile, what are the various areas that civil servants get to work in. So that made me more inclined towards choosing the stream of humanities and then moving into UPSC field per se. So, Ishita, if I may ask, like, how you got exposure when you came to Delhi, how you got the exposure about civil services? Was there any, seminar in the college, or so what exactly happened? Or it was during So the school time? yeah, so ma'am, while I was choosing my subjects for 11th and 12th, I initially chose science stream because I was not very clear which side to go. But as there were various seminars in my school itself, there. Your both parents were into medical profession. Did they not say that, oh, you should also join, or maybe that kind of an inclination of, as you very rightly said, of, connecting with the people and serving the people directly, working for the society. So definitely the medical profession does that. Yes. I So, had a kind of inhibition towards biology as a subject. I oh, was not very interested into it. So I didn't knew whether I would be a good student in that subject. So I didn't choose it. So then when I chose science stream, and there were some seminars and workshops in my school itself where they used to provide career counseling, and they used to tell us about various fields where a child can go and pursue their careers. So yes. this was the one field that aligned well with my thoughts and opinions. So I then chose to pursue arts from DU. And when I got into DU, the kind of environment it has, the kind of vibe, the professors and all, everybody so, but at a young age they are highly motivated, they're speaking about nation, they're talking about things that matter at a national level. So these things increased my interest towards this field, and then I started reading about the civil services more. Yeah, so I can also kind of relate to your experience to my days in Delhi University. So I also did my graduation in commerce from SRCC way back in 2003. I graduated, and I also did my law from Faculty of Law. So you are very rightly mentioning that the way Delhi University gives the exposure and the way they are oriented towards the country. And now, of course, I see more such, seminars, symposiums, talks being organized by different colleges through their different clubs and societies, which is, of course, all credit to the students, because it is generally the students who are taking the initiative. So yeah, so I can relate to that. And yes, one very important point for the viewers I would like to mention कि जो इशिता ने एक बहुत अच्छी बात बोली, जो बहुत important बात बोली, वो ये बोली कि जो एक प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विसेज का, वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको लोगों से कनेक्ट होने का एक अवसर प्रदान करता है, और लोगों के बीच में रह के उनके लिए काम करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है एट अ वेरी यंग एज. See, for example, age of 22 for Ishita. She is one of the youngest to qualify in her batch. And I also qualified when I was 24 years of age. So average age अगर आप देखें तो till you reach 30, you get your field postings, and in your different field posting as assistant collector, as SDM, as for example ASP, and then becoming SP. So you are in charge of the subdivision, in charge of the district, in charge of the commissionerate. So given all that profile, there is a lot of opportunity which this service gives us. So जो भी civil services की लिए aspirants हैं, जो कि एक बात होती है ना कि आपको सिविल सर्विसेज में क्यों आना है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. ऑफ कोर्स इसमें कैरिस्मा है, इसमें एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, बट दिस इज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच आई ऑल्सो फेल्ट attracted towards when I decided for joining the civil services.
Right, Ishita, very inspiring. Now, coming to your parents, you mentioned that they have been still practicing and they are serving the society. So, your parents' medical background, how has it, influenced your, upbringing? Whether, उनकी तरफ से किस तरीके का support रहा? Whether you are a single child, I just want to ask, you are a single child or No, you? no, I have a brother. I have a elder brother. So, what is he doing right now? He has a video production house in Noida. Okay, nice, 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 nice. So, Ishita, coming to your family, you mentioned about your parents. They have been into medical profession and they are serving the society. So, what has been their influence? उनका किस type का support रहा? And your sibling, you mentioned that you have a elder brother who is based in Noida. So, what has been their support? And then, how was their reaction when they saw your name in the list when you qualified, when the results were announced? How was that feeling for you and your family? So, ma'am, because most of my 22 years of life, about 18 years I have spent at home, and even my preparation, most of the part happened at home. So they have seen me very closely. So first of all, the kind of influence they had, because I have always seen them attending to emergencies, sometimes late night emergencies and all. So it mentally prepared me for the job that I am also going to go, because this kind of job, especially policing, would sometimes require me to go on, unexpected calls and all. So firstly, I was mentally prepared for that. Secondly, because they are working professionals, especially my mother is a working female. So she has taught me so many things on how to balance life, on how to balance between your work and your personal life. So these small, small things, which maybe I would have learned later, these things are already ingrained in me. So I think that would make me a good professional there. Thirdly, when talking about mental support, they have been very supportive, very understanding when it came to studies. They always knew that I cannot have a same productive day always. So whenever I was having a bad day, they were always cordial environment for me to study in this very long journey. Right. So one very important point which you mentioned is the balancing the personal and professional life, balancing the personal and professional, work. And this, of course, as you mentioned, that your mom, your mother, she has always tried to kind of guide you on that. So that will definitely, Ishita, help you when you join the service. Because as a woman officer, there are indeed many more challenges. Once you enter, you will understand that as a woman officer, as a lady officer, there are many more challenges which are kind of higher in comparison to the male officers, right? So that balancing of the family, balancing of the work, the profession, that is indeed very much there. But all lady officers, all female officers, like I have interacted with many of them till now in my service. So they have been doing it very beautifully, and I'm sure you also would be doing it with your confidence, with your zeal, with your enthusiasm, and with the way your upbringing has been. You mentioned that almost 18 years out of 22 you have been at home. So friends, एस्पिरेंट्स के जो पेरेंट्स भी, जो गार्जियंस भी एपिसोड देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके बच्चे जो करना चाहते हैं उसमें आपका पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो अपने सपने कभी भी रियलाइज नहीं कर पाएंगे. सो योर सपोर्ट इज वेरी वेरी क्रूशल. इशिता, कमिंग टू योर, you mentioned कि when did you thought about civil services. So when did you exactly start? मतलब आपने तैयारी कब से शुरू करी? क्योंकि व्यूअर्स ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपका इतनी यंग एज में क्वालिफाई आपने कर लिया, क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकेंड अटेम्प्ट था, और आपने कब से सोचा कि आपको तैयारी करनी है, एंड देन हाउ डिड यू अप्रोच टुवर्ड्स इट? व्हेन डिड यू स्टार्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली वेंट इनटू द प्रिपरेशन? तो मैम वैसे मतलब जैसे बचपन में पूछते हैं लोग कि क्या बनोगे, तो आई डोंट नो, मैंने बहुत पहले अपने 6th क्लास के रिपोर्ट कार्ड में लिख रखा है कि आई वांट टू गो इन सिविल सर्विसेज. ओह बट दैट नाइस. वाज नॉट द फाइनल पॉइंट ऑफ डिसीजन, बिकॉज वो चेंज होता रहता है. So I राइट. think my final decision was made when I was in class 11th or 12th, where I decided, ki, okay, this is the stream I want to pursue in. And when I entered college, so second year of my college in 2019,
my parents insisted me to join some weekend coachings and all that. So I did join it, but because of the hectic schedule and two things that were very hectic in themselves only were getting clashed, so I could not give much to the preparation. So actually, like at fully final, my preparation started in 2020 during the COVID. So this was my second attempt. So it took me approximately 2 years to firstly complete my syllabus and then sit for my first attempt, Okay. in which I could not qualify, and then this was my second attempt. So during that time, just to ask, during that time you were doing graduation? Yes, ma'am. So because it was COVID, so this was all online classes, no? Yes, ma'am. So because of COVID and online classes, I got a lot of time to prepare हाँ, for my yes. UPSC. सो स्टूडेंट्स के लिए देखिए, इशिता ने वो जो एक कहते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं, एक प्रोवर्ब है, आपदा में अवसर। तो वो आपदा में अवसर एक तरीके से हम सबके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एक आपदा ही आई थी जब कोविड-19 पेंडेमिक आया। लेकिन उन्होंने वो जो टाइम जो उनको अदरवाइज फिजिकली क्लासेस अटेंड करनी पड़ती, अपने घर से दूर रह के दिल्ली में आके उनको स्टेशन रहना पड़ता, एंड शी वुड हैव रिक्वायर्ड टू अटेंड द क्लासेस फिजिकली, एंड देन हो सकता है कि उनको सिविल्स की तैयारी को बैलेंस करने में शायद डिफिकल्टी आती। But ये COVID-19 pandemic, of course, it was a challenge to each one of us. Almost everybody got COVID either in the first wave or the second or the third wave. किसी ना किसी को एक बार हुआ ही होगा, I am sure. तो उसके दौरान भी उन्होंने ये जो एक चैलेंज था उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंस्पायरिंग है कि उन्होंने फिर 2 साल में अपना सिलेबस कंप्लीट किया, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका क्वालिफाई नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। देन शी रिकग्नाइज्ड हर मिस्टेक्स एंड देन शी got into her second attempt with the 2023 examination. It is very inspiring how she actually, you know, यूटिलाइज्ड द टाइम विच वॉज अवेलेबल टू हर, जो कि हम अदरवाइज सोचते हैं। हमने देखा कोविड-19 पेंडेमिक में कई स्टूडेंट्स डिप्रेशन में भी चले गए कि दे वर मिसिंग मीटिंग देयर फ्रेंड्स, दे वर मिसिंग द फिजिकल काइंड ऑफ क्लासेस एंड ऑल। सो it is also very important that you have that mental strength and mental courage to face and handle such kind of situations. Coming to Ishita, since you have mentioned about your 2 years time and all, so anything specific you want to tell to the aspirants for both prelims and mains? Interview I'll ask you later on. Prelims और mains के लिए कुछ आपकी तरफ से special tips? What are the things which the students who are preparing, they should keep it in mind for both the stages? Ma'am, firstly, I one myth I would like to burst here is people think कि prelims और mains की preparation बहुत अलग अलग होती है, कि आप prelims का पहले पढ़ेंगे फिर mains का पढ़ेंगे। अगर हम ऐसा करने चलेंगे ना तो मेंस के लिए सिर्फ 3 महीने बचते हैं, उतने टाइम में हम मेंस पढ़ ही नहीं पाएंगे। सो द प्रिपरेशन इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी इंटीग्रेटिव। Yes. सो रादर देन टेकिंग की प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं मेंस पढ़ रहे हैं, फोकस इज ऑन कि आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करिए एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, फिट देम वेल इन योर माइंड, and then orient your understanding as per the questions of prelims and question of mains. So सबसे इम्पोर्टेंट मैम, मेरे जो अर्ली सक्सेस का अगर मैं कहूंगी ना, सबसे बड़ा मेरा जो फैक्टर था वो ये था कि माय रिसोर्सेज वर वेरी लिमिटेड। आई डिड नॉट रन टू एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज फॉर ईच सब्जेक्ट। आई चोज वन रिसोर्स, either a teacher or either a book, and I just stick to that. I read it multiple times and made notes out of it and tried to underline some value addition that I could see from other sources, but my primary source was just one. It took me time to finalize that source, but once I finalized it, I trusted it blindly, and this helped me save a lot of time. So while other students were busy in collecting various PDFs from Telegram channels and various PDFs from coaching institutes and all, I was utilizing that time to re-revise my concepts. So this helped me build my concepts to the core level that I can even tell that thing in my sleep. So that helped me to save time and improve the accuracy of my answers. Thirdly, ma'am, when it comes to current affairs, people are like very confused about how to approach it. So in current affairs as well, I just chose one source, one newspaper, but I made it a daily habit to pursue, to read the newspaper, make
points out of it, make notes out of it, and then revise the notes. Because what happens in current affairs, our notes keep on compiling, and we have huge loads of notes, but we never get time to revise. So I just kept one source, used to revise it, and then move on to the next day, the other task. I never obsessed What too was much your about that. source, Ishita? Just for curiosity, what was your source for current affairs? I used Indian Express news. Indian Express. Okay. 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 Yeah, that was it. Yes, yes, And yes. then when prelims and mains were approaching, my very big focus was on previous year questions, Previous because years. it is something through which we can understand the minds of the UPSC examiner. So even in my mains, I failed my first mains. So if you ask what was the changes that I made in those two attempts, so in first attempt I was more about test series, solving many tests and giving more number of tests. But in second, I switched from tests to the previous year questions, starting from 2013 till 2022, because they are already approximately 400 questions, and even if we can complete all of them in 3 months, it's a huge thing. Right. So I switched to previous year questions, analyzed them, realized the trends, how they are repeating, and that literally gave me a very good insight on what questions can be repeated, or on what grounds other questions can be asked. वेरी नाइस. सो फ्रेंड्स, जस्ट टू रीइटरेट, एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है जो इशिता ने बोली कि प्रीलिम्स और मेंस जो हमारी प्रिपरेशन है, दे आर नॉट डिसजॉइंटेड, राइट? सो ऐसा नहीं है कि वो रिलेटेड नहीं है, बिकॉज द एंटायर जीएस सिलेबस विच इज कवर्ड इन मेंस, वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी, इवन दो देर आर सम टॉपिक्स विच आर एक्स्ट्रा in mains, but you cannot just exclusively read for prelims and read for mains. What is required is a comprehensive study. Of course, the pattern of questions which are being asked, it's different, objective versus the subjective part, so that is always there. But आपको combine थोड़ा सा पढ़ना है, और मेंस के लिए ये भी बहुत important है कि आप पहले पढ़ें प्रीलिम्स देने से पहले, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी शुरू करोगे तो यू विल नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू कवर द सिलेबस. So it is important to cover your main syllabus before you actually write your prelims examination. That is very, very important. And then जो इशिता ने बात बोली, repeated revisions. Have your study material limited in number. ऐसा नहीं कि आप एंड तक भी नया कुछ पढ़ रहे हैं. नया पढ़ना है करंट अफेयर्स के लिए, for your updation of the current affairs, but not the subject, not the topics which are mentioned in the syllabus per se. उसके लिए you need to identify what is it that you have to study and then stick to it. चाहे वो आप ऑनलाइन लीजिए मटेरियल, चाहे आप फिजिकल मटेरियल लीजिए, वॉट एवर इज द मटेरियल अवेलेबल, यू ट्राई टू हैव इट इन अ कंसाइज फॉर्म फॉर द सेक ऑफ रिविजन, बिकॉज रिपीटेड रिविजन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप उसको याद करके आप लिख नहीं पाओगे, स्पेशली एज फार एज द मेन्स इज कंसर्न. सो राइट. So thank you, Ishita. And yes, one also very important point is PYQs, the previous year questions. PYQs, friends, give you the orientation about UPSC, and they are actually very close. It is very true कि कभी वो question repeat नहीं होंगे. So people say कि PYQs करने का फायदा क्या है, वो question तो repeat नहीं होते हैं. Question will never be repeated in UPSC. That is the beauty. But what is important is that you will get a flavor of what is going on, the flavor of how the questions are getting framed, and they are much more real than the mock test. So उस पे ध्यान रखना है. Thank you for these insights, Ishita. Coming to your optional subject, because मेंस में optional subject बहुत स्टूडेंट्स के लिए कई बार टफ भी होता है, कौन सा ऑप्शनल लेना है, ग्रेजुएशन वाला डिफरेंट लें. So what was your optional subject? Why did you choose, and like how did it score for you? So optional subject. Yeah, so as per my journey is concerned, ma'am, in 11th and 12th, economics was my subject, and then when I got into graduation, I pursued economics. So I had a inherent interest in the subject, firstly, and secondly, while I was looking at other subjects for optionals, I was very little familiar with others, so I was not comfortable in choosing. Although when I got to know about what resources are there in the market, everybody just threatened me about economics, that it is not a very good optional to score and there are very little resources. But I just trusted my instincts that I am very comfortable with the subject and I can go with it.
So my opinion on choosing optionals is one must choose the optional based on what they think that they can pull it off or what they can understand it well, because optionals is not like GS subjects that requires very basic knowledge. Optionals is one degree higher, it goes on the knowledge of bachelor's and master's. So optionals is something that must that you must be very nicely interested in, Yeah. because it is the subject that makes your rank, it is the subject that gives you a massive boost in your scores. So it must be chosen very wisely, and once it is chosen, it requires a great amount of time and hard work as well. Yes, yes, yes. So friends, very rightly mentioned by Ishita that whatever subject, जो भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, आपको उसमें अपना इंटरेस्ट सस्टेन करना है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने 2 महीने पढ़ लोगे और आप उसको मेंस लिख के आपका काम चल जाएगा. इट इज नॉट लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स मेंशन बाय इशिता कि इसका जो लेवल है दैट इज एटलीस्ट 1 लेवल अप देन द ग्रेजुएशन लेवल. सो अगर आपने सब्जेक्ट वो सपोज ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है और अगर आप उसी को चूज करते हो तो एक एडवांटेज ये मिलता है दैट यू आर थ्रू द बेसिक्स, यू नो द बेसिक्स, यू ओनली नीड टू प्रिपेयर as per the pattern of the questions which are being asked in the UPSC. So that makes your task comparatively easier in comparison to any subject which you take totally afresh. अगर आप totally कोई नया subject choose करते हो तो उसके लिए आपको मेहनत आई थिंक ज़्यादा करनी पड़ती है. Even though every year people change their streams, people change their optionals. Like so मेरा ऑप्शनल कॉमर्स था, कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. वी हैड 2 ऑप्शनल्स एट दैट टाइम फॉर मेंस. एंड इफ आई कंपेयर द पीपल हु यूज्ड टू टेक कॉमर्स, इट वाज वेरी लेस. बिकॉज कॉमर्स के बारे में भी जैसे इशिता ने बोला ना कि जैसे कि इट इज लेस स्कोरिंग या देयर आर मेनी टेकर्स फॉर इकोनॉमिक्स, सेम थिंग हैज बीन विद कॉमर्स ऑल्सो. बट वाई आई टुक वॉज द सेम थिंग बिकॉज आई फेल्ट कि मैंने ये इतना पढ़ा हुआ है, तो आई फेल्ट दैट कंफर्ट लेवल एंड आई फेल्ट कि मुझे तो बेसिक मेहनत एटलीस्ट नहीं करनी पड़ेगी. आई ओनली नीड टू लिवरेज टू गेट अ गुड स्कोर. सो देयरफॉर आई सिलेक्टेड कॉमर्स. सो फ्रेंड्स, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइजली, बिकॉज ऑप्शनल की वजह से आपका सिलेक्शन हो सकता है और आपका सिलेक्शन रह भी सकता है. सो चूज योर ऑप्शनल वेरी वाइजली and judge your instinct. That is very, very important. Coming to Ishita, now the interview. So as it was your second attempt, so I'm sure कि आपने जैसे जब तैयारी की होगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, देन सेकंड अटेम्प्ट में आपने किया. So like exactly how much time you got for preparing for the interview, and then what was the special tips which you would like to share of appearing for the interview, and then how did your interview go on? So when it was held, तो वो कैसा गया, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था? Yes, the personality test. Okay. So as yeah, yeah. So as I had given first mains, and I that mains went very well, but I could not clear. So in the second mains, I did my job very well, and I was very confident of getting an interview call. So I started my interview preparation even before the mains results were declared. So I downloaded a DAF format and filled it and started preparing on my DAF pointers. So some part of the preparation was already done before the results, and when the results were announced and when the dates for interview were given, so this year interviews were started 1 month earlier because Yes, maybe of elections or what. Yeah. January end they started. Yes. No, ma'am, started in the January beginning, अच्छा, big. 2nd of January. Yeah. Oh, okay, okay, okay. Yeah, so my date sheet came on 19 December, and I was very shocked to see my interview was on 3rd January. So I had just 14 days to prepare. Oh my God. And for the first day, I was shaken. I didn't knew. I felt like I have already lost this attempt, and let's prepare for the next one. But then my parents, my friends consoled me, and they just said, "You just prepare. We are with you." So, firstly, I had my DAF notes pre-prepared, so Yeah. that helped me. Yes, yes. Secondly, because my economics was optional and I had to narrow down things that I had to prepare. So I just sat and took out all the newspaper articles that were relevant for economics in the past 1 year. And I just sat and I took a big goal of completing all that newspaper articles in one night. So I remember I completed 70 newspaper articles in just one night.
Sometimes I feel, ma'am, pressure is the biggest motivator and it's the biggest push in your preparation. So that worked for me. It makes you perform. Yeah, truly, ma'am. Then third thing I did was to prepare about the current affairs that was going in. For example, the bills that were going on in the parliament, because parliament was in session at that time. And I prepared about telecom bill that was just tabled 2 days ago. And in my actual interview, a whole discussion happened with one member on the telecom bill and all that. So it really helped me. So because I didn't have much time, I could not prepare much. So these were the immediate areas that I focused on. And then I took some mock interviews, and whatever suggestions they gave me, whatever areas they told me to prepare, I prepared according to that because of the time constraint. And then talking about my interview experience, so first it was my first interview and I was a very young candidate, so I was a little intimidated, a little nervous how it would go and all. But when I entered the room and I sat there, so maybe the panel was trying to test how I'm performing under pressures. So they were bombarding a lot of questions on me, one after another, not letting me speak, not letting me complete. So I was very nervous at one point. I was like, am I saying wrong? Or what is it? They had no expressions on their faces. And I was literally very nervous. When I came out of the room, I had tears in my eyes. I felt like, oh my God, what happened? I was very intimidated. But when I told the same experience to my parents, because maybe they have been in professional life for so long and all, they just simply said, ki, oh my God, your interview went so well. If they are bombarding questions like this on you and you're not breaking, you're not changing your stance, that means you have performed very well. Don't worry. But I could not judge it. And when the interview marks came, I got 200, and my parents were like, yeah, we knew that you did very well. So that summed up my interview experience. Such an awesome thing to know. Friends, only 14 days when she got her name for the interview and how she prepared. So preparation के लिए friends एक सबसे important बात क्या है कि आपके पास जब मेंस लिखने के बाद जो टाइम होता है उसको यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. What many aspirants do, which is a mistake, is that they kind of only relax कि अब अच्छा मेंस दे दिया, अभी बहुत पढ़ाई है, जब इंटरव्यू की डेट आएगी तो उसकी तैयारी शुरू करेंगे. अगर इशिता ने भी यही किया होता तो एटलीस्ट उन्होंने जो डैफ की तैयारी पहले कर ली, जो एप्लीकेशन फॉर्म, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंटरव्यू बिकॉज वी हैव डैफ प्रिपरेशन, you have preparation for the current affairs, you have preparation for your background, that is the subject, you have preparation for your optional. So ये तीन चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इंटरव्यू में. और अगर उन्होंने इन एरियाज पे पहले से ही ये ध्यान दिया और वो तैयारी की, इसीलिए इतने कम टाइम में भी शी कुड परफॉर्म सो वेल. And Ishita, just to share, even my interview experience was similar to you. I actually, felt कि I am appearing in a courtroom because it was totally a tense environment. One question after the other. The chairman of the board was Mr. DP Agarwal. DP Agarwal sir. Later on, he became the chairman of UPSC. Retired, of course, now. एंड उनके बोर्ड जब आता था, जब पता लगता था कि उनका बोर्ड आ गया, तो एस्पिरेंट को, कैंडिडेट को पहले ही मन में हो जाता था कि सिलेक्शन होगा नहीं, बिकॉज ही नेवर यूज टू गिव गुड मार्क्स एक्चुअली. तो वो अगर 150 नंबर किसी को देते थे तो दैट मीन्स यू आर अ मेरिटोरियस चाइल्ड, है ना. बट देन यू सफर इन द लिस्ट बिकॉज देर आर अदर बोर्ड्स विच विल गिव यू हायर मार्क्स. सो all said and done, so the UPSC system is like that. You cannot predict anything. And the similar thing happened with me was कि it was a kind of too much of a pressure. Questions from my background, questions from current affairs. There were some questions which I did not know because आप सब कुछ नहीं पढ़ के जा सकते हो. Friends, ये important है कि आपको सब चीज़ें नहीं पता होंगी. But what is important is that you accept that with humility and you do not enter into argument. You do not have to, bluff your statements just for showing कि नहीं जी आपको आता है. वो हेल्प नहीं करेगा. हेल्प करेगा आपका कॉन्फिडेंस एंड आपका पॉइज, जो कि वो सिविल सर्वेंट्स में देखना चाहते हैं कि कोई भी प्रेशर की सिचुएशन हो उसमें वो ऑफिसर अपने स्टैंड पे खड़े हैं और वो राइटफुली खड़े हैं और वो प्रेशर में अपना गिव अप नहीं कर रहे हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज सच एन ऑसम थिंग टू हियर, इशिता, दैट आफ्टर you were in kind of tears and then you scored 200 marks. So friends,
you are your own judge and you have to have that courage in yourself, that confidence in yourself. And अगर इशिता उस टाइम में भी अगर सपोज बोर्ड रूम में ही अपना, वो कहते हैं ना, अपना कंट्रोल अगर खो देती, तो दे वुड हैव अंडरस्टूड कि नो, शी इज नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर. बट शी वॉज देयर कॉन्फिडेंटली, शी आंसर्ड द क्वेश्चन वॉट एवर शी न्यू, शी डिड इट ब्यूटिफुली. सो यही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन हमारी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. अगर आपके पास टाइम अभी भी कम भी है, लेकिन उसमें अपना बेस्ट कैसे दे सकते हो. अगर उन्होंने 70 आर्टिकल्स को पढ़ के सिनॉप्सिस अगर उन्होंने एक रात में निकाल लिया, तो आप भी कर सकते हो, हम सब कर सकते हैं. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज फेसिंग द इंटरव्यू with your confidence, with your humility, with your personality. It is actually a personality test because knowledge they test in the prelims and mains. आप अगर उस लेवल तक पहुंचे हैं तो दैट मीन्स यू आर इन द टॉप लॉट, जिसमें से 7 से 8 हजार बच्चों में से उनको 1000 की लिस्ट आउट करनी है. सो द रेशो इज 1:7 और रेशो इज 1:8. सो देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट योर नेम वुड बी देयर इन द लिस्ट. What is important is that you perform with your confidence. Very nice to hear, Ishita. So what has been, कोई ऐसे कुछ लेसन जो कि आप, ऐसे कोई हिदायत जो एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो फ्रॉम योर ओन यूपीएससी जर्नी, फ्रॉम योर प्रिपरेशन टाइम, एनी स्पेसिफिक थिंग यू वांट टू शेयर विद देम व्हिच दे शुड कीप इन माइंड. मैम, व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है ना जो बहुत लंबी जर्नी है और इसकी सक्सेस बहुत बड़ी है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं, कि जैसे मुझे ही लगता था कि मेरे फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, दे आर अर्निंग ऑन देयर ओन एंड आई एम जस्ट सिटिंग हियर इन माय रूम एंड डूइंग नथिंग, या फिर अनएम्प्लॉयड हूँ. तो ये सारे जो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये माइंड को डाइवर्ट करते हैं. तो जर्नी बहुत लंबी है. तो it's very important to enjoy the whole journey, enjoy the whole experience. Even if I'm learning something new about electoral bonds, that should fascinate me, that should make me feel ki oh acha aisa hota hai, rather than just taking it as a boring concept. Because these are the small small things, small small joys in the preparation that makes you keep going and again and to sustain for 2 3 years. So it's very important to enjoy the whole process. Without that आप नहीं sustain कर पाएंगे. The motivation has to come from within. ये बाहर की रॉयल एंट्री वीडियोस देख के या किसी और का फेलिसिटेशन देख के आप नहीं सस्टेन कर सकते. तो अंदर से आवाज आनी बहुत कल जरूरी बच्चे होती है. सोशल मीडिया पे इतनी रील्स देखते हैं, इनफैक्ट मेनी ऑफ द रील्स आर डिस्टेंट फ्रॉम रियलिटी. Yes. मैं अभी रिसेंटली कॉलेज में गई थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक रील मैंने देखी कल, जिसमें एक आईएएस ऑफिसर की बाई चांस शादी हो रही है, वो शादी की रील दिखा रहे हैं. और वो शादी हो रही है तो वो जिस गाड़ी में है, मेल ऑफिसर दिखाया है, उसके आगे 4 गाड़ियां और पीछे 4 गाड़ियां. मैंने कहा वो तो किसी की भी हो सकती है. ही नीड नॉट बी एन आईएएस ऑफिसर फॉर गेटिंग 8 व्हीकल्स मूविंग इन द कारकेड टुगेदर. And this, of course, will not be provided to you by government. This will never be provided to you by government. So don't be misled by such kind of reels. Utilize your time on social media very wisely. And जो इशिता ने बात बोली कि अपना मोटिवेशन खुद बनना है, इसमें आई एम जस्ट रिमाइंडेड ऑफ एक एक बौद्ध दर्शन का एक सूत्र है, वाक्य है, सूत्र वाक्य है. सो बुद्धिज्म में जो गौतम बुद्धा ने बोला, उन्होंने ये बोला, अपदीपो भव, अपदीपो भव, बी योर ओन लाइट. तो अपना प्रकाश स्वयं बने फ्रेंड्स, अपना प्रकाश स्वयं बने, बड़ा इंपॉर्टेंट है. दैट यू हैव टू डिराइव योर ओन मोटिवेशन. सो फॉर दैट रीजन, व्हाट इज योर रीजन फॉर बीइंग इन सिविल सर्विसेज, दैट थॉट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं, और ये जो रीजन है ये आपका खुद का होना चाहिए. ये किसी का थोपा हुआ डिसीजन होगा, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे. Very, very inspiring, Ishita. Now you have qualified, you have become an IPS officer. You will soon go for training, and you will firstly join at Labasna, Mussoorie, and then you'll go to the NPA, have your training. Katas a lot honge. You'll start your field postings. What are your areas in which you would like to work upon? Have you thought on? क्योंकि आपने जैसे बताया कि आपको 11th 12th से ही माइंड में एक रुझान कहीं ना कहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है. So there might have been some reason for that, and then are there some areas which you have thought upon that yes, you want to work when you join the service? मैम, फॉर स्पेसिफिकली टॉकिंग, क्योंकि अब मुझे आईपीएस अलॉट होगा, so there are 2 3 areas that
I want to work upon is firstly कि जो policing system है वो women friendly होना चाहिए, and उसके लिए सबसे important is to for more women to come, especially at the higher authorities. So when I'll be going, I would like to ensure that people, especially women, are not afraid of coming to the police. पुलिस को एज अ एक डर वाली चीज की जगह देखने की बजाय उनको एज अ फ्रेंडली उसमें देखा जाए, दैट दे आर देयर फॉर योर हेल्प, फॉर योर सपोर्ट, रादर देन आपको थ्रेटन करने के लिए. सेकेंडली मैम, व्हाट आई फील इज कि जैसे ऑब्वियसली आई डोंट हैव मच ऑफ ग्राउंड एक्सपीरियंस, बट व्हाट ऑल आई हैव रेड इन माय बुक्स एंड current affairs is prisons. So one thing I would really like to work upon is improving the quality of prisons and what kind of things go on there, how the inmates are treated, how they're kept there. So how to work on their reformative behavior. I would really like to contribute in that area. Very importantly, you mentioned, Ishita, about women का welfare increase करना through policing. And as you very rightly said, कि people are still afraid to come to police stations because of the impressions which are being carried in the society. And Ishita, just to add on to what you said, it is of course the leadership at the top level which percolates down. It is also the behavior at the street level. So the behavior of the cops who are posted at the police stations, your constables, your SHO, and even constables से जो नीचे रैंक के ऑफिसर्स हैं, तो उनका भी जो बिहेवियर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पीपल सेंट्रिक नहीं है पुलिसिंग में, अनफॉर्चुनेटली. आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ एज deputy commissioner, as collector, so people feel more comfortable approaching the civil officers rather than going to the police station. थाने में जाने में उनको डर लगता है. And especially when we talk about women, now the states are taking initiatives of having more women at the lower level also. For example, बिहार में I got to know कि वहाँ पे रिजर्वेशन है for women in all government jobs. सो उन वहाँ पे विमेन की रिप्रेजेंटेशन नीचे लेवल पे भी बहुत इंक्रीज वो कर रहे हैं. एंड वी आर सीइंग नाउ many states including Tripura, including Haryana, where I worked in, they have these mahila police thanas, mahila police stations. Even Delhi has, so what is the setup is कि I'm sure आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे महिला SHO, महिला पुलिस कांस्टेबल और बाकी महिला ही स्टाफ पोस्टेड है, ताकि if a female wants to lodge a complaint, she feels confident and she's comfortable in talking and discussing her problem. So this is one aspect, and yes, it is very much required कि एक behavioral change हम लेके आए. And of course prison you mentioned, very much required. jail inmates का जो welfare है उसका, उसके ऊपर ध्यान देना. Coming to your part of women welfare, you yourself are a woman officer now. एंड आई एम श्योर आपने लाइफ में कुछ कुछ चीजें ऐसे देखी होंगी विच यू फेल्ट दैट देयर इज अ प्रेजुडिस इन द सोसाइटी, टुवर्ड्स वुमेन. सो एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ वुमेन IPS ऑफिसर, what further you would like to do to contribute for improvising gender parity in society, women welfare in the society? Mhm. Ma'am, firstly, what I would like to emphasize is that when we talk of equality, it should not be treating men and women as equal, because there are some differences there that are there. Men will always be better at physical things, at physical strength than women, and women will always be better at things of emotional intelligence and all. So first is to realize these differences and then utilize these differences at our at our jobs and all. So as a female IPS officer, I would like to improve the work culture of the organization, of specifically the police forces and all the forces that would be under me, so that everybody is able to realize their capacities without humiliating or without mocking the capacities of other. For example, not mocking the female constables for their less physical strengths, because they have other emotional strengths as well that can Yes, yes. help to understand the psychological behavior of the complainant or the or the accused as well. So it's very important to have a cordial work culture within police force as well, so that they are better able to connect with the masses and serve their jobs better. Very important that work culture should improvise. In fact, we see now community policing is an initiative which is being taken by various states, in which they have these kind of, meetings at the village level with the people of the village. And it's kind of an informal thing in which they have some cultural programs
जिसमें विलेजर्स पार्टिसिपेट करते हैं. सो दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. नाउ इशिता, FP, as we are approaching towards a conclusion, so uh, any thoughts with the young aspirants, any thought with the audience, any final thoughts which you would like to share to inspire them who are pursuing their UPSC dreams, or who are pursuing to reach up to higher level, not only necessarily UPSC, कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आपका संदेश क्या होगा? कुछ आप ऐड करना चाहोगे? मैम, माई सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हेयर वुड बी सेल्फ एनालिसिस, कि आपको खुद को परखना बहुत जरूरी है, अपनी गलतियों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है इस प्रिपरेशन में भी एंड लाइफ के किसी भी एग्जाम में. आपकी गलतियां, अगर आप अटेम्प्ट दे दे के अपनी गलतियां सीख रहे हैं, उससे बेटर है आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अपनी गलतियों को एनालाइज करें, राइट. उसको सुधारने की कोशिश करें, सो दैट आपके अटेम्प्ट्स अपने आप कम हो जाएंगे वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स. सो दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज, मैम, हार्डवर्क बहुत लोग कर लेते हैं, सब करते हैं हार्डवर्क, बट परसिवरेंस, वही हार्डवर्क रोज रोज करना, बार बार करना, इट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज, अ लॉट ऑफ Right. मेंटल स्टेबिलिटी. सो आज की, स्पेसिफिकली आज की जनरेशन में, जहाँ पे वी आर ड्रिवन बाय इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, instant fame, it's very hard for people to sustain, to persevere. So I would say कि अगर जितनी ऊंची उड़ान भरनी है आपको, आपको थोड़ा सा पीछे जाके, जैसे एक एरोप्लेन धीरे धीरे अपनी पावर भरता है एंड देन इट स्टार्ट्स रनिंग ऑन द रनवे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे देयर फॉर अ while, persevere, and then go on your flight of life. Friends, very important is self-analysis, knowing your limitations, knowing your potential. जो हम एक मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, स्वॉट. स्वॉट एनालिसिस, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है. स्ट्रेंथ को आपको लिवरेज करना है, वीकनेस को आपको मिनिमाइज करना है. इफ यू डू इट करेक्टली, योर फेलियर वुड रिड्यूस. एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इवन इफ यू फेल, so failure is a stepping stone to success. Failure should not demotivate you for a long time. It should act as an analysis, as a critical analysis of why did not you perform well. That is very important. And perseverance is most important, कि आप हार्ड वर्क को सस्टेन करना है. यूपीएससी की जो जर्नी है वो एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है. मिनिमम 2 साल लगते हैं किसी को भी इसको सिलेबस को कंप्लीट करके आपको एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अगर क्लियर करना है तो फ्रेंड 2 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल तो पूरा प्रिपरेशन, ये एग्जाम का ही टाइम है. प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, दैट प्रोसेस इन इट सेल्फ टेक्स 1 ईयर. सो 1 ईयर उससे पहले और 1 ईयर जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें लग जाएगा इफ यू क्लियर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. सो मिनिमम इट इज 2 years एंड देन इट स्ट्रेचेज अप टू 3, 4, 5, वट एवर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स you decide to give for this. So it is very, very important that you have a positive outlook, you have a positive self confidence, a positive self belief कि हाँ, मेरे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर आत्मविश्वास है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ. एंड देन दैट एबिलिटी टू कंटिन्यू योर एफर्ट्स, दे आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस, वी हैव सक्सेस स्टोरीज लाइक इशिता, जिन्होंने बहुत यंग एज में सोचा कि मुझे क्लियर करना है, बट कोविड-19 पेंडेमिक में एक तरीके से कुछ सिनेरियो चेंज हुआ. किस तरीके से उन्होंने उस सिनेरियो से अपना एस्पिरेशन को, अपने सपनों को उन्होंने उड़ान दी, और किस तरीके से शी हैज़ बिकम the one of the youngest to qualify in the civil services, not only in this result, I would say, even in the entire history of UPSC, because qualifying at the age of 22 is actually a countable number. I think हर बैच में ऐसे कैंडिडेट्स काउंटेबल ही होंगे फ्रेंड्स. सो शी डूइंग दैट, एंड यस, वी कैन सी द कॉन्फिडेंस, दैट कमिटमेंट ऑफ हर ज्वाइनिंग द इंडियन पुलिस सर्विस एंड IPS ऑफिसर बनने के बाद जो भी उनके मन में इतनी अच्छे विचार हैं, इतनी अच्छी उनकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है, उसको देखते हुए आई एम वेरी मच श्योर विच एवर कार्डर इशिता गेट्स, विच एवर place she gets posted, she is going to perform, she is going to work for the people. And it is indeed my proud privilege to interview her, to share her story with you all. And फ्रेंड्स, इशिता जैसी स्टोरी या मेरे जैसी स्टोरी, हम सब आपके बीच में से ही हैं. वी आर नॉट समवेयर आउट ऑफ द वर्ल्ड. सो अगर हम ये कर पा रहे हैं, और ऐसे हमसे भी और ज़्यादा मेरिटोरियस भी हैं, आई ऑलवेज बिलीव कि मेरे से भी ज़्यादा और भी मेरिटोरियस बच्चे हैं,
और सिर्फ यूपीएससी के थ्रू ही आप सिविल, आप देश सेवा कर सकते हैं, आप नेशन के लिए कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। देर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स विच इज अवेलेबल, मेडिकल service, medical profession, you have an NGO, you have a civil society organization. So you are the key, youth is the key change agent of social change, of economic development, of innovation. So we have to harness our potential, and we have to align our personal goals with the goals of the society. That is most important. Just to conclude, एक हिंदी की पोएट्री जो आप सबने सुनी होगी, उससे मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल. व्हाट यू नीड टू डू इज दैट you have to give your best, give your honest best committed efforts, and even then sky is not the limit for all of us. My gratitude, my thanks to dear Ishita for joining us on शिखर का सफर. ये फ्रेंड्स एक मेरा बहुत ही रिसेंट इनिशिएटिव है, जिसमें मैं इस तरीके की अभी वेबिनार के थ्रू मैं ये स्टोरीज कवर कर रही हूँ. आफ्टर सम टाइम आई वुड ऑल्सो ट्राई टू हैव दिस इन अ काइंड ऑफ अ फिजिकल प्लेटफॉर्म, जिसमें रूबरू उन गेस्ट को बुला के मैं इंटरेक्शन करूंगी. आई वुड ऑल्सो request Ishita, whenever my setup is kind of ready, I would request if she has time. Of course, they will be going in for training in coming few months. But if she is in Delhi, if she can come, it would be my pleasure to meet her in person. And my best wishes to you, Ishita. I am sure you will excel. You will make your parents, your family, your country proud. And whenever you are in Delhi, Ishita, please let me know it. Even if without, recording, it would be indeed my pleasure, my happiness to meet you in person. Thank you so much for joining, Ishita. और सभी व्यूअर्स जो आज Thank हमारे you so साथ इस much. एपिसोड में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने देश की उन्नति प्रगति में अपना सकारात्मक योगदान देते रहें. जय हिंद, जय भारत.